So we have completed aphorism number 185 to 195, where we have seen one-sided diseases, its classification and local maladies. Now we will start external application. So these aphorism number 196 to 203, external applications. So external applications, we have learned it in the first year. So what are the external applications? They are the ointment, liniment, or the lotions, plasters, then the hot fermentation, cold fermentation, ointments. So these are the certain external applications. But the use of these external applications in the homeopathy, whether it is allowed or not, or what are the bad effects of using these external applications, it is given in these aphorism 196 to 203. So in the aphorism number 196, what they have given, it might indeed seem as though the cure of such diseases would be hastened by employing the medicinal substance which is known to be truly homeopathic to the totality of the symptoms, not only internally but also externally, because the action of a medicine applied to the seat of the local affection might affect a more rapid change in it. So Dr. Hyman has given the employment of the medicinal substance which is truly homeopathic, and we know we are giving the medicine only on the basis of totality of symptoms. So when you are giving medicine on the basis of totality of symptoms, so but at the same time, because this disease is a local disease or it is a local malady, so your intention is to remove it very fastly, because cosmetically it is not very much good. तो वो अच्छा नहीं दिखता है if there is an external कुछ mark है तो if you having a rash or if you that patient may have the boils या फिर ulcers, external अगर कुछ रहे या फिर simple pimple भी आ जाता है face पर, so it is very disgusting कि बाप रे मेरे face पे pimple आ गया है ना. So externally if it is the some mark is there, some rash is there, so we will not feel better. So in that case, what we are doing, we are using the chandan ka lep, then the aloe vera ka lep. So we are using this certain external application. So this here also Dr. Hanuman has explained that if you are giving the medicine internally and also externally, then what will happen? Because the action of a medicine applied to the seat of local affection, यानी जहाँ पे आपको eruptions है वहाँ पे अगर आपने एक्सटर्नली कुछ लगाया, आइदर आप ऑइंटमेंट लगा सकते हो या फिर आप लेप लगा सकते हो या फिर कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम आप वहाँ पे लगाते हो या स्क्रबिंग करते हो. So whatever the thing you are using externally on that local affection, तो क्या होगा उससे? Might affect a more rapid change in it. So
it will cure very fast, लेकिन this will not be a cure. Cure क्यों नहीं होगा? Because you are externally removing it very fast. So लेकिन उसके roots कहाँ पे है? Under that skin. So वो रूट से वो चला गया है या नहीं ये हमको पता नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर रिमूविंग इट एक्सटर्नली. और एक्सटर्नली अगर वो इरप्शन चला गया, वो रैश अगर चली गई, सो व्हाट यू विल थिंक ये चला गया एंड यू विल स्टॉप द इंटरनल मेडिसिन. अब इंटरनल मेडिसिन आप अभी बोलोगे कि नहीं मैडम हम लोग इंटरनल मेडिसिन वी विल कंटिन्यू. कब तक चालू रखोगे? दैट पेशेंट विल नॉट टेक मेडिसिन once that rash will over. that patient, because किसी को भी मेडिसिन लेना अच्छा नहीं लगता, कितना टाइम तक वो मेडिसिन लेगा ना. सो वी विल आल्सो स्टॉप एंड पहले हमसे पहले वो पेशेंट स्टॉप कर देगा वो मेडिसिन लेने. वो आपके पास भी नहीं आएगा एक बार वो रैश चली गई तो. सो when you are using that medicament internally as well as externally, so that effect is very rapid and this will lead to the rapid changes. So this is the first thing that is happening कि when you are using the true homeopathic medicine. लेकिन ये homeopathic medicine you are giving on the basis of what? On the basis of totality of symptoms. And we know how the totality is forming. The totality is forming on the basis of characteristic symptoms. So if that patient is having the psoriasis, लेकिन psoriasis का example बहुत बड़ा हो गया. If that patient is having a urticaria, rash आती है urticaria में, right? So what you will do? You will ask the common symptoms, and once your diagnosis is confirmed with the help of that common symptoms, then you are intended or your intention will be to get the characteristic symptom or the rare symptoms. So you will ask that patient any positional modality or the time modality or the seasonal modality, any food allergy, then the discharges, itching, then the various ameliorating factors you will interested in that, so that you will get some characteristic and you will make the totality of symptoms. So this totality will help us to find out this internal medicine. Suppose you are after forming this totality, your medicine selection or your selected medicine, suppose it is the urticaria unis, that is the pathologically अगर है, या फिर अगर आप pathological नहीं गए, on the totally basis of the constitution and all the modalities, complete symptom और ये सब mental symptoms again, अगर ये सब आपने सब कुछ देखा and your medicine suppose it's from the pulsatilla, then ये आपने इंटरनल मेडिसिन सिलेक्ट करी. एक्सटर्नली आपने उसको, वो पेशेंट क्या बोलेगा कि ये ना पूरी रेड रैश आती है हाथ पर, गले पर, पैर पर और स्टमक पर. सो वो इचिंग होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट इचिंग इट इज वेरी ऑकवर्ड पोजिशन to each on the stomach or to each on the legs or on the neck. So give me some external application so that it will feel soothing. So what you will do there? So आप उसको जल्दी से एक ऑइंटमेंट लिख कर दोगे, या फिर वो पेशेंट आपसे भी नहीं मांगेगा, बिकॉज nowadays on the television or on the Google there are the so many advertisements are there, where they will get the cream easily available from Amazon, from the Flipkart and from any other agency. So it is very easily available medicament which will give the fast relief or which will give the soothing effect on that urticaria. So without asking you, that patient will start using the aloe vera gel, or they can be use any ayurvedic product, or they can be use any ointment कि बाबा वहाँ पे उस, या फिर simply they will use powders. टेल्कम पाउडर को छोड़ के
जो भी पाउडर्स अवेलेबल है, आयुर्वेदिक पाउडर्स, सो दे विल स्टार्ट यूजिंग दिस पाउडर्स. सो व्हाट विल हैपन, वो चला जाएगा एक्सटर्नली, या फिर पेशेंट को अगर स्वेटिंग अगर हो रहा है और उसके साथ अगर अर्टिकेरिया है, so by using that cream and by using that powder, the sweating will stop, and once the sweating will stop, the urticaria will not be there. सो वो पेशेंट क्या करेगा, वही चीज इस्तेमाल करते जाएगा. आपने जो डोज दिया है वो भी वो कंप्लीट करेगा, एंड कुछ टाइम के लिए बिकॉज ऑफ यूजिंग दैट एक्सटर्नल एप्लीकेशन उसको रिलीफ रहेगा, एंड देन ही विल से कि नाउ मेरा अर्टिकेरिया ठीक हो गया है, तो वो आपके पास फिर से आएगा भी नहीं. सो इन दैट पैलिएशन स्टेज व्हाट विल हैपन, it will affect the rapid change in it. Uh, what the word he has used here, Dr. Haniman, rapid change. He has not used the word rapid cure. Remember it. Now, in the aphorism number 197. So 196 में उन्होंने क्या दिया है कि the cure of the disease is hasten. It is increases when the medicinal substance is known to be truly homeopathic. आप होम्योपैथी की मेडिसिन उसको दे रहे हो on the basis of totality of symptom, not only internal. यहाँ तक सब ठीक था कि आपने इंटरनल मेडिसिन उसको दी, लेकिन नॉट ओनली इंटरनली बोला है, बट इसो एक्सटर्नली. सो वो क्यूर कब होगा, जब आप सिर्फ इंटरनल दोगे. अगर आपने एक्सटर्नल भी देना शुरू कर दिया, then Dr. Hanuman used the word here more rapid change. प्रीवियसली क्यूर बोला था, लेकिन अभी उन्होंने कहा है more rapid change. So this will not affect that patient very nicely. The patient will be in only rapid change. He will not in a condition of cure. The next aphorism. 197. This treatment, however, is quite inadmissible. Inadmissible यानी, first we will read the aphorism and then we will discuss. Not only for the local symptoms arising from the miasm of Sura, but also and especially for those originating in the miasm of syphilis or psychosis, for simultaneous local application along with the internal employment of the remedy in the diseases whose chief symptom is a constant local affection, has this great disadvantage that by such a topical application, or you can pronounce it as a topical application, this chief symptom or local affection will usually be annihilated sooner than the internal disease. And we shall now be deceived by the semblance of resemblance चाहिए यहाँ पे actually. कर सकते हैं क्या changes? नहीं. Resemblance of a perfect cure, or at least it will be difficult and in some cases impossible to determine the to determine from the premature disappearance of the local symptom if the general disease is destroyed by the simultaneous employment of the internal medicine. So in this, he has given the second disadvantage. In the aphorism number 196, he explained first disadvantage. What is that?
the cure will not be there, only the change will be there, and that change will be a rapid one if you are giving the medicine internally as well as externally. Okay, that is the first disadvantage. Second, that we will see now. This treatment, that means external treatment, however, is quite inadmissible. ये नहीं देनी चाहिए. This is not the admissible. Not only for the local symptoms arising from the Meisen sora. So ये तो सोरा के लिए नहीं देना चाहिए. So सोरा के symptoms कौन से रहेंगे on the external scene पर कि injury है because of the fall, because of the some burn या कटिंग इंजुरी है, जल गया है, छील गया है, या फिर गिर गए हो आप, या चलते चलते कोई चीज लग गई कि वो जहाँ पे सिर्फ superficial or the epidermis is involved, the superficial layer of your skin is involved, there is no destruction of tissue, there is no outgrowth of tissue. So these are all the external, या फिर सिर्फ itching है, सिर्फ छोटे छोटे बॉयज वहाँ पे है, एकदम रैश है, या फिर वहाँ पे रेडनेस है. So which are a very functional superficial symptoms are there, they are belongs to the local symptoms of sora. So sora में तो वो नहीं देना है, but also and especially for those originating in the myzum of syphilis or psychosis. So तीनों myzum उन्होंने यहाँ पे इन्वॉल्व किया. So सोरा के symptoms हमने देखे on the skin. Now we will see about the psychosis. तो psychosis के external manifestations आपको कैसे मिलेंगे? By the formation of warts, carbuncles, या some growth of the bone. So ये सब symptoms आपको मिलेंगे psychosis पर. या फिर एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द सेल्स, जैसे ये ऐसे कोई भी एक स्ट्रक्चर आ जाए आपके हाथ पर, सो दैट विल बी द एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ योर स्किन. देन द सिफिलिस, सिफिलिस में क्या रहेगा? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, अल्सर हो गए वहां पे, एब्सेस होंगे जो बॉयल हुए थे सोरासिस में, अब सॉरी सोरा में, उसमें अभी क्या होगा साइकोसिस में? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ pus, there will be the formation of the water in it, and that papules, that pustules, they now converted into the ulcers. So once the ulcer reach, so that stage is the syphilitic stage. तो सोरा से पेशेंट सिफिलिस में कैसे कन्वर्ट हुआ? फर्स्ट रैश थी, साइकोसिस में उसमें थोड़ा सा पानी जमा हो गया, थोड़ा सा पस जमा हो गया, एंड नाउ दे आर स्टार्ट डिस्चार्जिंग और सिक्रेशन हो गया वहाँ पे. सो दैट विल बी अ साइकोटिक कंडीशन, और थोड़ा साइज भी बढ़ गया है वो रैश का या वो बॉइल का. एंड थर्ड स्टेज में क्या हो गया? दे आर नाउ पेनेट्रेटिंग डीप इनटू द सेल्स, इनटू द टिश्यूज, and now there is a formation of abscess and the formation of ulcer. So sora will transfer into the psychosis and the psychosis will convert into the syphilis. So ये अगर condition है, कोई भी condition में, कोई भी stage में, if the patient comes to you, maybe it is sora, local affection of psychosis or the local affection of syphilis, ये कोई भी condition में it is quite inadmissible, ये admissible नहीं है. क्या? This treatment to give external application for the simultaneous, ये जो word है simultaneous, this is important. Simultaneous यानी क्या? एक साथ. लोकल एप्लीकेशन यानी डायनामिक एड भी आप उसको दे रहे हो, simultaneously you are giving local application along with the internal employment. किसके इंटरनल एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो आप? ऑफ द रेमेडी in disease whose chief symptom is a constant local affection. आप कहाँ कौन से डिसीज में ये सब कर रहे हो?
कि जहाँ पे दैट डिसीज का जो चीफ सिम्टम है वो कांस्टेंट लोकल अफेक्शन है, यानी उसको इंटरनली कुछ भी कंप्लेन नहीं है, ना पेशेंट को नौशिया है, ना पेशेंट को डायरिया है, ना पेशेंट को हेडेक है, ना पेशेंट को स्टमक एक है, कुछ भी नहीं है इंटरनली. ओनली द पेशेंट कम्स टू यू विद द कांस्टेंट लोकल अफेक्शन फ्रॉम मेनी years, because this is a type of one-sided disease, and that one-sided disease belong to which class? Chronic class. So वो आपको आपके पास सिर्फ आएगा कि I am having this eczema, I am having this psoriasis, or I am having this warts or carbuncles, whatever may be the symptom, or the extra growth from many years. This is only the constant affection. So in that, if you are giving the internal employment of the remedy, plus if you are giving the external application, then what will happen? Maybe SORA, maybe psychosis, and maybe syphilis. कोई भी condition में, if the patient comes to you with a chief symptom of a local affection, and you are administrating internal medicine plus external or the topical application, then what will happen? The second disadvantage is given here. Has this great disadvantage that by such a topical application यानी आप बाहर से उसको कुछ लगाने के लिए दे रही हो, दिस चीफ सिम्टम कौन सा, ये जो है चीफ सिम्टम इज अ कांस्टेंट लोकल अफेक्शन, उसको बहुत सालों से है वो, विल यूजुअली उसका क्या होगा, बी annihilated, it will be removed sooner than the internal disease. तो आप क्या कर रहे हो, you are giving internal medicine as well as external medicine. So क्या होगा, that external affection will annihilated much earlier, much sooner than the internal disease. वो बाहर से चला जाएगा, internally disease वैसे ही रहेगा. ये जो सोरा है या सिफिलिस है या साइकोसिस है, will be remain as it is internally. And we shall now be deceived. Deceive यानी we are cheating it by the resemblance of a perfect cure. हमको लगेगा कि external चला गया है, that is deceiving, वो cheat कर रहा है हमको, and it is resembles with that of the perfect cure. अभी चला गया है ना सिम्टम, तो हमको क्या लगेगा या पेशेंट को क्या लगेगा, now that condition is cure, or at least it will be a difficult and in some cases impossible to determine क्या from the premature disappearance. Remember here the word used premature disappearance of the local symptom. If the general disease is destroyed by the simultaneous employment of the internal medicine. तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिसएडवांटेज कौन सा हो रहा है, बाय यूजिंग दिस टॉपिकल एप्लीकेशन, जो चीफ सिम्टम था पेशेंट को बहुत सालों से, दैट विल डिसअपियर, दैट विल एनिहिलेटेड, बहुत जल्दी इंटरनल डिसीज से बहुत पहले ही वो इरप्शन चला जाएगा, और फिर वो इट विल रिजेंबल जस्ट लाइक द क्योर, कि अभी ये पूरा ठीक हो गया है, बट दिस इज अ डिसीव, वो चीट कर रहा है, वो सिर्फ रिजेंबलेंस है, इट इज नॉट द परफेक्ट क्योर. या फिर क्या होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, या फिर कुछ कुछ इसमें इट इज इम्पॉसिबल हो जाएगा. क्या कि वेदर ये जो डिसअपरेंस हुआ है प्रीमैच्योरली, यानी बहुत जल्दी जो हुआ है, हियर द वर्ड दे हैव यूज्ड सूनर, and here Dr. Hanimal uses a synonym of it, that is the premature. जो लोकल सिम्टम चले गए हैं प्रीमैच्योरली, वेरी अर्लियर, वेरी जल्दी, सो ये क्या करेंगे,
the general disease is destroyed, if the general disease, ये जो चले गए हैं prematurely, ये अगर अच्छा है तब, if the general disease is destroyed, लेकिन अंदर से भी अगर ये सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस अगर साइमल्टेनियसली चले गए हैं बाय द एम्प्लॉयमेंट इंटरनल मेडिसिन, तो ही वो जनरल डिसीज ठीक हो गया है, देन ओनली दैट डिसीज इज जनरली क्योर। नहीं तो फिर दिस इज द डिसीव बाय द रिजेम्बलेंस ऑफ परफेक्ट क्योर। तो एक्सटर्नल जो भी थिंग्स है वो अगर इंटरनली भी चले जाते हैं by using the simultaneous employment of internal medicine, then only we called it as a generalized cure. Otherwise it is very difficult or it is impossible to determine ki that local symptoms disappear prematurely and this is not the cure. So when you are giving the medicine internally as well as externally, so it is difficult to judge whether that disease is removed internally, that miasm is removed internally as well as externally. So सिर्फ externally अगर वो चला जाता है with the external application and simultaneous use of internal aid, तो वो external application से बहुत जल्दी चला जाएगा and internally it remain as it is. So this will not a perfect cure. So perfect, this will only a resemblance of perfect cure. तो perfect cure कब होगा, जब internally और externally तो दोनों मेडिसिन आप एक साथ यूज कर रहे हो and the complete annihilation from internal first, या फिर एक्सटर्नल भी फर्स्ट हो गया है एंड विद दैट इंटरनली भी वो मेडिसिन या वो डिसीज अगर चला जाता है देन ओनली इट विल बी अ परफेक्ट। So two disadvantages we have seen in the 196 में हमने देखा कि that only a rapid change and in the 197 में हमने देखा कि it will only resemblance of cure. It will not the perfect cure only by using the topical application. But if simultaneous use of internal aid if you are using, then if the internally भी अगर disease चला जाता है then only it will be a perfect cure. Otherwise, it will only a resemblance of perfect cure. Now, 198. So here, what they have given. The mere topical employment. Again, we will read the aphorism first and then we will discuss. Mere topical employment of the medicines that are powerful for cure when given internally to the local symptoms of the chronic miasmatic diseases is for the same reason quite inadmissible. For if the local affection of the chronic disease be only removed locally and in a one-sided manner, the internal treatment indispensable for the complete restoration of the health remains in dubious obscurity.